चलिए, all right. So hi guys, a very warm welcome everyone joining us here at BYJU'S Exam Prep. स्वागत है आप सबका. Welcome everyone. Hope all of you are doing well and following this amazing current affairs quick revision series that we have got for all of you preparing for the year 2022. Guys, if you're preparing for any law entrance exam, this is the series for you. General awareness के लिए one stop destination for all there is, right? We've started this series from the month of May. Yesterday we completed September and today we are all set to begin October current affairs. So let's quickly begin. I welcome all of you joining us here today. Hi Glory, Jyoti, welcome Asmita, Satyam, good evening guys, good evening, Gaurish, Ali, welcome Shikhar, बहुत स्वागत आप सबका. Guys, do share this video with all your friends so that everyone can join us quickly for this very helpful session. Lots of things happened in the month of October. Lots of important things happened and we will cover those important things here in this session, right? So चलिए देखते हैं how many are you guys able to retain. I'm sure all of you have already studied October current affairs. How much are you guys able to retain out of the same? We will find out today in this session. So let's go. Let's start for the month of October. Quickly share this with your friends, guys. फटाफट से. As you know, towards the end we will have a few questions that we will be practicing, so make sure you do pay good attention to whatever we are studying before we start attempting the questions. Let's go. Let's start. Chaliye ji. So guys, the first news is about the Reserve Bank of India. When I talk about Reserve Bank of India, two things come in my mind, right? Basic things that every one of us should be aware of. Number one, where is the headquarter of RBI? Number two, the RBI governor. Also, the total number of RBI deputy governors. If you are aware of the same, I will definitely be impressed. Do share the same. Meanwhile, the Reserve Bank of India has granted the National Asset Reconstruction Company the license to register as an asset reconstruction company, which is seeking to turn around bad loans worth 2 trillion rupees. Guys, you know what bad loans are? Basically, people who take loans and then they can't pay them back. उसको वापस नहीं चुका पाते. That exactly, is termed as a bad loan. उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं bad loan. Right, that is actually known as a bad loan. Now, asset reconstruction company. Now, what exactly is an asset reconstruction company? It's basically a company where you basically, let's say you have defaulted for a loan of 5 lakh rupees, right? You did not pay the EMIs, etc. and the balance amount is 5 lakh rupees, which you are supposed to pay in the next 6 months. Now, what this asset reconstruction company will do, they will basically say that instead of paying it in the 6 months, you pay it in 6 years. Right, we will bring down the EMI, but start paying some amount, right? We will, cut it down from 6 months to we'll do it for 6 years. The EMI which you are supposed to pay right now, which is close to 90,000, you will have to pay just roughly around whatever the amount is, right? So बहुत substantially कम कर देंगे. So this is basically restructuring of your assets. So this is why these companies, what they do is they make sure they give options to people who cannot pay the said amount that they actually promised before, right? So ये basically है the working of the asset reconstruction companies. This is how they actually function. Very good. I can see Shaktikan Das as your answers. Well done. And also the headquarter. Well done. Good job. Very good. People who are watching us, you have to basically share your answers in the comments as well, right? Comments में बताइएगा. जो भी मैं questions पूछ रहा हूँ, उनका आंसर एक एक करके comments में बताते रहना है आपको. चलिए, let's go. So the first news is this. Second, according to world's best employers ranking, employers, right? The people who actually are the owners, right? The bosses, right? Unki ranking hai published by the Forbes. Reliance Industries becomes the best employer here in India. Forbes के हिसाब से best employer किसको दिया गया? तो ये दिया गया है जी Reliance Industries को. The Mukesh Ambani led organization. I'm sure all of you have heard about Reliance Industries, तो बिल्कुल ये याद रखिएगा. चलिए, so Mukesh Ambani's RIL
ओवरऑल ग्लोबली अगर हम देखें तो 52nd रैंक है, इंडिया में द रैंक इज फर्स्ट. सो वर्थ रिमेंबरिंग, याद रखिएगा आप सभी. ठीक है जी. तो रिलायंस हैज टॉप्ड द चार्ट्स. ऑल्सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज फॉलोइंग फॉलोइंग द 52nd पोजिशन ऑफ रिलायंस ग्लोबली. आप देख सकते हो आईसीआईसीआई बैंक इज एट 65th पोजिशन, एचडीएफसी बैंक इज देयर एट 77, एचसीएल इज देयर एट 90. Right, the top place in Forbes rankings was occupied by Samsung, followed by IBM, Microsoft, and Amazon. So lots of Indian companies are also there. Chaliye. Next, hi guys, welcome everyone. Good afternoon, all of you joining us here. Shabash, सब लोग जुड़ चुके हैं. Good job. चलिए. Do share with all your friends फटाफट से so that nobody misses out on any news here. Third, Abiy Ahmed, you remember this, we have discussed this numerous times, has been sworn in as the Prime Minister of Ethiopia for a second 5-year term. Mr. Abiy Ahmed, why is he important? Because he is a Nobel Peace Prize winner. Nobel Peace Prize winner Abiy Ahmed in the year 2019 received the Nobel Peace Prize. He has sworn in as the Prime Minister of Ethiopia, becomes important for many reasons, right? आपको क्वेश्चन, आपको पैसेज दे सकते हैं नोबेल प्राइजेस का, और वहां पे बेसिकली एक अबे अहमद का क्वेश्चन दे दिया इस तरह से, राइट? क्योंकि ये करंट भी है, रिलेटेड है नोबेल प्राइजेस से, दिस कैन बी आस्क्ड, राइट? सो यू शुड बी अवेयर. चलिए, नोबेल प्राइज विनर, बेसिकली द करंट विनर्स यू शुड बी अवेयर एज वेल. वी विल बी डिस्कसिंग देम टुडे हियर इन दिस क्लास एज वेल. Next, BC Patnaik, as you can see, has been appointed as a managing director of LIC. So people who are preparing for any entrance exam, be it CUET or any such other private law entrance exams as well, this is a news which is definitely important. Let's go. Next, Bibek Debroy. Bibek Debroy will be the chairman of the reconstituted 7-member Economic Advisory Council to the Prime Minister. Very, very important. Do write the name. Do remember this. Very important this is with respect to our exams. Bibek Debroy. Do remember this, right? He is the chairman of the 7-member committee who is there to advise the Prime Minister on economy related matters. ठीक है जी. Meanwhile, all of you already know the finance minister of India is Nirmala Sitharaman. ये तो आप सबको पता ही है. मुझे बताइए, who is the finance secretary? बताइए, who is the finance secretary? This is the question. You guys have to share the answers in the comments. Answer in the comments. ठीक है जी. देखते हैं कौन कौन सही आंसर करते हैं. चलिए. Next, Narendra Modi, the Prime Minister of India, has launched the Indian Space Association, which is a private industry body to help space technology, take a leap forward here in India. So, kaise? You all know that the impact SpaceX has, done to the well-being of the American space program, right? They are basically using reusable rockets, all thanks to the Elon Musk led SpaceX. They basically created this, the SpaceX basically created a rocket which can be reused. Now, NASA started using the same. NASA had more money, more resources, but they were not able to build this reusable rocket. A private organization did for them. So, learning from that, India is also doing the same. India is saying that there will be private entities like Airtel, Reliance, etc. All of them will club together and they cumulatively will respond to one body, one private industry that will be known as Indian Space Association. So in order to exercise, or if they want to do some sort of experiment, they want some infrastructure or any such, for कुछ तो करना पड़ेगा ना. जैसे अगर आपको सैटेलाइट बनानी है तो आपको कुछ ना कुछ आपको रिक्वायरमेंट्स होंगी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, व्हीकल की, या फिर जो भी टेस्टिंग एरिया, जो भी चाहिए आपको. So for all of that, you will now have an organization which will be there, addressing all your queries and whatever your needs are. The name of the organization is Indian Space Association.
Indian Space Association. ये एक private industry body है which is there to boost space technology in India. You can see here founding members include OneWeb, Airtel, MapMyIndia, as you can see here, Walchand Nagar Industries, Anand Technology, among others, right? So these are all some institutions or members who have joined hands and now will be there in the will be there helping the Indian space program. The ISPA will participate and work with ISRO, of course, and others on the issue of policy around space technology and domain. So बहुत ही अच्छी initiative है. Let's see. काफी सारी आपको पता है स्पेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती ही है. काफी सारी चीजें इस बार होने वाली है. दिस गगनयान, आदित्य मिशन, लॉट्स ऑफ मिशन बेसिकली इसरो रिलेटेड, जो कि हम आज करेंगे भी, पहले भी करा है और आगे भी करेंगे. इस रिवीजन सीरीज में जो जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं स्पेस से रिलेटेड, वो सब हम डिस्कस करेंगे. सो मेक श्योर यू आर aware of everything. Let's go. Next, the Swamitva Scheme, a central sector scheme which is implemented by the Ministry of Panchayati Raj. Who is the Union Cabinet Minister of Panchayati Raj? जल्दी से कमेंट्स में लिख के बताइएगा कौन है जी मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर फॉर पंचायती राज. मीनवाइल क्या किया जी, आपको पता है when we talk about villages, right, rural areas, people usually say that we have, let's say this is a village, right? People basically say that we have 5 acres of land, we have 50 acres of land, but they actually do not have the proper demarcation of how actually the entire village is, right? Say for example, this is a village, this is A, right? Village A, this is A, right? So basically this is how people believe that the village is, let's say the farming area is allocated. This is what the people actually believe, right? People have their own man-made boundaries. Now whatever they say on the document, etc., they are not aware. People 1 2 3 4 5 6, they have basically decided that this is how their farming lands look like. In reality, when this the government basically took notice of the same, and with the help of drones, they made sure that they surveyed the entire territory, entire rural area, entire farming land. The answers, the findings were obviously quite different. So basically, as per the drone technologies, the survey that happened, this is how basically the entire farming land looked like. So this should have been the entire. So this is how, just an example, I'm just giving you an example, right? So this is what the farmers believed in the figure A. The farmers believed that yes, this is how their distribution is, but in reality B, as you can see on your screen, this is what the reality is. So now, because obviously there is lack of documentation, lack of proper boundary measures, so this Swamitva scheme is an initiative where people now, villagers who basically have great difficulty in procuring loans for their land, because again the same problem they face when the people who basically grant loan, they come and for surveys, they are not sure which land is theirs and whether they are saying this, whether this land actually belongs to them or not, right? So this is why this Swamitva scheme is coming into place, where they will give them the official status, this land belongs to you, and documentation will be there as well, so that people can go and get loans and everything that is required. Well done. I can see lots of you in the comments, in the chat have given the correct answer. Very good job. I'm very impressed. Well done. Let's go. Chaliye. Next, here we go, is the news related to, again, environment, animals. You can see here, National Tiger Conservation Authority has declared combined areas of you can see here, Guru Ghasidas National Park and Tamor Pangla Wildlife Sanctuary as 4th Tiger Reserve of Chhattisgarh. The question can be asked as it is. Instead of Chhattisgarh, there will be a fill in the blank and they will ask you identify the state,
right? Also, there can be questions on the Wildlife Protection Act. In which year did the Wildlife Protection Act come into being? Then they can basically ask us about the tigers, right? Tiger surveys. They can ask us about which state in India has the most number of tiger reserves. So this basically, these are some questions which can be formed on just this news itself. So you can understand, even with a simple news as this, which we deem ki this is a one liner, this is just for ALET or such other exams, that is not the case actually, right? Every news can be linked with other things, and they can form definitely a passage, and 5 questions can be easily made around it, right? 5, 6, 4 as is the need. All right, chaliye. All right, let's go next. 9th, Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation has been approved till 2025-2026. तो चलिए, बहुत खूब, बहुत खूब. अब चलिए, ये रहा जी. अब यहां पे बात हो रही है अमृत 2.0 की, राइट? अमृत 2.0 हैज बीन अप्रूव्ड टिल 25-26, राइट? चलिए, अब यहां पे देखिए, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन टिल 25-26 to provide reliable and affordable water supply and sanitation services to urban households. मतलब शहर के लोगों के लिए ड्रिंकेबल वाटर पहुंचाया जाए, ये बात की जा रही है. जब मैं अमृत 2.0 की बात करता हूं, जैसे ही मैं पानी की बात करता हूं, मुझे अचानक से याद आ रहा है यमुना याद आता है, राइट? यमुना का जो अभी वाटर है, अरविंद केजरीवाल लेड गवर्नमेंट हैज सेड दैट वो ड्रिंकेबल बनाएंगे यमुना को बाय द ईयर डैश, फिल इन द ब्लैंक. The second question that I am asking you, third question जो मैंने आपको पूछा है, ये फटाफट से आप मुझे बता दीजिएगा फिर से वापस कमेंट्स में, भाई क्या है, किस ईयर तक वादा किया है कि भाई यमुना को ड्रिंकेबल वाटर बना देंगे, यमुना के पानी को, वो बताइए. खैर, तो इसका बजट आप देख सकते हो 2,77,000 करोड़ है, टू मेक श्योर कि अफोर्डेबल वाटर सप्लाई जो है कम से कम पहुंच जाए सारे अर्बन एरियाज में. नेक्स्ट is very important news. The Kushinagar International Airport to boost Buddhist tourism. This was actually done. बिल्कुल याद रखिएगा, to boost Buddhist tourism. Alright, the Kushinagar International Airport is the 9th airport in Uttar Pradesh that basically started its flights. The first passengers were from Colombo, Sri Lanka. कुछ monks थे जो कि वहां पे आए थे. बुद्धा से related this place is very important. तो बताइए, what is Kushinagar famous for? Why is Kushinagar important? क्या है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो हमें पता होनी चाहिए? चलिए, लेट्स सी इफ यू आर अवेयर. बताइए जरा, कुशीनगर में क्या हुआ था? जल्दी से बताइए. विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स. मीनवाइल, India's rank in the Global Food Security Index 2021 is 71st. So do remember this. Rankings are very important. You all know this, right? So India's rank, Global Food Security, the answer is 71st. Next is very important one, 12th. To celebrate the contribution of the of the king of Manipur, of the freedom fighters which are there from Manipur, to celebrate their contribution, Mount Harriet there in Andaman and Nicobar, where freedom fighters of Manipur were imprisoned. उनको काला पानी की सजा हुई थी वहां पे, तो ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ दैट इज, राइट? तो वहां पे जो सजा हुई थी उनको, उस जगह को माउंट हैरियट को नाम चेंज कर दिया गया है और कर दिया गया है माउंट मणिपुर, राइट? टू सेलिब्रेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स फ्रॉम मणिपुर अलॉन्ग विद द किंग ऑफ मणिपुर, ये माउंट मणिपुर नाम रखा गया है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज, पता होना चाहिए आपको, ठीक है जी? चलिए, all right. So when I'll be discussing the 2022 CLAT exam, right? CLAT का जब एग्जाम एनालिसिस जब मैं कर रहा हूँ, मैं आपको ये स्लाइड दिखा रहा हूँ और मैं बोलूंगा ये देखिए, मैंने बोला था ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो ये आप देख सकते हो, यू कैन नोट दिस डाउन. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड. ऑल दीज इंफॉर्मेशन, ऑल दीज न्यूज, वन बाय वन, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली प्योर गोल्ड. एवरीथिंग इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट यहाँ, राइट? सारी चीजें जो यहाँ मेंशन्ड है, सब के सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो जल्दी से लिखना स्टार्ट कर लीजिए. वेरी गुड.
देखिए दोस्तों, कई लोग जो हैं गलत आंसर दे दिए हैं, कई कंफ्यूजन है कुशीनगर को लेकर। तो मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। गौतम बुद्धा was born in Lumbini, right? He attained महापरिनिर्वाणा, that means he basically यू नो जो उनकी डेथ हुई थी वो बेसिकली कहाँ हुई थी, वो हुई थी कुशीनगर में, राइट? कुशीनगर में डेथ हुई थी। और एनलाइटनमेंट कहाँ मिला था? बोध गया। बोध गया में मिला उनको एनलाइटनमेंट। तो ये पता होना चाहिए हम सभी को, ठीक है? काफी कंफ्यूजन दिखा था मुझे चैट में। चलिए, ऑलराइट, नेक्स्ट। रशिया हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड the hypersonic missile Zircon from a nuclear submarine for the first time। दोस्तों, ये जो मिसाइल है बहुत तेज चलती है भाई, साउंड की स्पीड से भी ज्यादा तेज चलती है। The challenge has become the first movie. This can also be asked, guys. आपको पता है स्पेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, एंटरटेनमेंट का ये क्वेश्चन भी डाल सकते हैं आपको वहां पे। The challenge has become the first movie that was shot in the International Space Station। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया था। अब जो है सारी कंट्रीज अपना अलग अलग बनाने जा रही है। इंडिया भी कह रही है हम भी अपना अलग बनाएंगे, चाइना भी कह रहा है, रशिया भी कह रहा है, सब जने अलग अलग बनाना चाह रहे हैं। South Korea has launched its first space rocket to be completely developed and built in the country itself, and it is called as Nuri। नूरी नाम है, याद रखिएगा जी। साउथ कोरिया का पहला खुद का स्पेस रॉकेट बनाया जा रहा है और नाम है उसका नूरी। चलिए, ऑल दीज इंफॉर्मेशन, ये सारे के सारे जो 6 पॉइंट्स हैं, ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू आवर एग्जाम। दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मैं आई कांट स्ट्रेस इनफ। नेक्स्ट, अब ये तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है जी। देखिए आप, क्योंकि सारे के सारे नोबेल प्राइज विनर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। श्योर शॉर्ट मार्क्स इन योर एग्जाम, आई राइट इट डाउन फॉर यू, ठीक है? श्योर मार्क्स लीक्ड कह सकते हो आप इन योर एग्जाम्स, राइट? ये पक्का आएगा जी। देखिए, लिखित में दे दिया मैंने आपको ये कि भाई सारी चीजें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए जी, क्या क्या चीजें हैं इसमें? तो सबसे पहले आप देख सकते हैं डेविड जूलियस आडम पाटापूटी, इस तरह से याद रखिएगा। और ये क्या जीत गए जी? नोबेल प्राइज इन मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी। द नेक्स्ट वन, मानबे हैसलमैन परीसी, प्ले विद द नेम्स यार, प्ले विद द नेम्स। ये जीत गए नोबेल फिजिक्स का प्राइज, राइट? आराम से खेल सकते हो इनके नाम से। ये देखिए, अब्दुल रजाक गुना, इस तरह से याद रख सकते हैं। नोबेल प्राइज ये देख सकते हैं गुरना जी को मिला फॉर लिटरेचर, ठीक है जी। फिर देखिए डेविड कार्ड, और यहाँ पे एंग्री है भाई, गाइड कर दो इनको। देखिए डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्री, इस तरह से इट बिकम्स इजी फॉर अस टू रिमेंबर। नोबडी विल आस्क अस ओरली कि भाई बताइए क्या आंसर है इसका, नहीं, हमसे तो गोला भराएंगे एग्जाम में, ओएमआर मार्क करवाएंगे। तो उसके लिए अगर हमें थोड़ा सा पता भी है, एंग्री कार्ड और गाइड, ये पता है हमें कि भाई ये जो है इकोनॉमिक्स का है, तो बस वहां पे जैसे ही हम देखेंगे वो ऑप्शन, हम आराम से मार्क कर पाएंगे। That is what you have to understand. You don't have to mug up things to learn names. Just play around with the names. Just do the magic with the names. Just थोड़ा सा उनको अपने हिसाब से इनको मोल्ड कर दीजिए and remember it. Very important this is with respect to our exam. चलिए, the next one, G. Satish Reddy has been conferred with the prestigious Aryabhatta Award. Very important, guys. Aryabhatta Award is Smriti Mandhana, of course. Again, is very important. First Indian woman to score a test 100 on Australian soil. तो ये भी बिल्कुल 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 याद रखने का। चलिए जी, डन है, डन है दोस्तों, डन हो चुका है मामला। चलिए, ऑल राइट, done, done, done. Let's go. Next one. FC Goa has won the Durand Cup football. The sports related news. This is important. ठीक है जी, स्पोर्ट्स रिलेटेड आ सकती हैं। एफसी गोवा भाई दुरंत कप फुटबॉल जीत गया। तो बहुत सारे एग्जाम जहां पे इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, देख सकते हैं आप। इंडोनेशिया हैज वन द 2021 थॉमस कप। इससे ज्यादा जरूरी है, ये बहुत ही प्रेस्टिजियस क्लब है जी, इन मतलब दुनिया का ओल्डेस्ट, राइट, ओल्डेस्ट club in cricket world,
राइट। कौन सा? द MCC, द मैरीबॉर्न क्रिकेट क्लब। इसमें इंडक्ट हो गए हैं जी, लाइफ मेंबरशिप मिल गई है हरभजन सिंह और जवागल श्रीनाथ को। बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल याद रखने लायक है। 2021 का जो IPL हुआ था दोस्तों, वो कौन जीता था? चेन्नई जीती थी। अक्टूबर में ये हुआ था और अभी हम वापस से वी आर इन द मंथ ऑफ मे एंड वी आर हियर विटनेसिंग द नेक्स्ट एडिशन ऑफ IPL। तो वो काफी फ्रीक्वेंटली हुए हैं इन दिनों में। कारण था पिछली बार कोविड की वजह से, गलत टाइम पे हुआ था, मतलब यूजुअली अप्रैल मई में होता है, बट एनीवेज इस बार मई में अभी फाइनल होने वाला है। चेन्नई सुपर किंग्स तो इन ऑल लाइकलीहुड आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट, सो आर द कोलकाता नाइट राइडर्स। लेट्स सी who comes out at the top as winners. My bet is on चलो क्यों बताओ, छोड़ो, आप देखना अपने हिसाब से। चलिए, नासा इज poised to send its first spacecraft to study the Trojan asteroids of Jupiter planet. So they can ask this question कि भाई नासा जो है वो भेज रही है ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स, ये कौन से प्लैनेट से रिलेटेड है? तो द आंसर इज जुपिटर। सो डू रिमेंबर दिस, ठीक है, बिल्कुल याद रखने लायक है। इसके बाद इंडिया हैज टेस्ट फायर्ड अ बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 from the APJ Abdul Kalam Island in Odisha, and the range of this missile is 5,000 kilometers. Just imagine, 5,000 किलोमीटर है। All the countries, right, across continent, this missile can actually go. Right, all the nearby countries are definitely in danger, but ये तो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल हो गई। 5,000 किलोमीटर, मतलब काफी दूर तक फेंका जा सकता है इसको। चलिए बढ़ते हैं आगे, लेट्स मूव ऑन फ्रॉम हियर। नेक्स्ट इज दिस, the 10 questions that are coming your way. Let's see how many questions you guys are able to answer. Towards the end, जो comments हैं वहां पे आप अपना मार्क्स जरूर मुझे बताइएगा। After you watch this video, how much have you scored? Let's go. The first question, again discussed just recently, the range of the Agni 5 missile is dash. What is the range? Very good, Daman. Well done everyone. Satyam, Ali, Sunita, Abhinav, Violet. Well done everyone. Well done, Aditi, Arshia, Akansha, Glory, Sharvari, Muskan. Well done, Aniket. Yes, the correct answer is डी, बिल्कुल सही। तो चलिए, डी बिल्कुल सही जवाब, 5,000 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन भी एक्चुअली ऐसा है जो कि हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू आंसर दिस वन। बताइए, ये मैंने मार्क करा था, मैंने बोला था इंपॉर्टेंट भी है। लेट्स सी इफ यू गाइज कैन आंसर दिस। क्या जवाब है? बहुत टाइम लगा रहे हो यार, जल्दी से बताओ, फटाफट से, इतना टाइम लगा रहे हो। चलिए, काफी लोगों ने सही जवाब दे दिया भाई। शर्वरी, श्रेया, वेल डन, अर्पित, तान्या, गौरीश, ममता। यस, द आंसर इज डी, विवेक देब्रॉय। विवेक देब्रॉय इज द करेक्ट आंसर। गुड जॉब श्रेया, गुड जॉब अली, अस्मिता, शिखर, वेल डन। चलिए, अब दोस्तों ये इसका आंसर ये है भाई, हैदराबाद। देखो, हिंट कई बार ना क्वेश्चन में दिया होता है, हमें लगता है कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये कैसे लाएंगे। कॉमन सेंस यूज करिए। इन चारों में से कौन सा क्रिकेटर है जो हैदराबाद से है? राइट, बिगेस्ट क्रिकेट बैट इन हैदराबाद, यूजुअली राइट। इस तरह से अगर आप एलिमिनेट करें तो आप अपना करेक्ट आंसर तक पहुंच जा सकते हैं। तो क्या है जी, इनमें से कौन सा क्रिकेटर है जी हैदराबाद से? कौन है? सो द करेक्ट आंसर टू दिस वन, आपको पता है, सचिन और गावस्कर दोनों जने महाराष्ट्र से हैं। कपिल देव इज फ्रॉम हरियाणा। द करेक्ट आंसर हियर इज मोहम्मद अजरुद्दीन। वेल डन सत्यम, वेल डन अली, अदिति, वेल डन मुस्कान, श्रेया, ममता, अश्मिता, वेल डन एवरीवन, गुड जॉब पांडे जी, विवेक, तान्या, वेल डन। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड वाइल्ड लाइफ DNA एनालिसिस लैबोरेटरी वाज ओपनड अप इन विच स्टेट? ये क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं इस क्वेश्चन का। हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू आंसर द करेक्ट आंसर? ऑलराइट, द करेक्ट आंसर हियर इज ए महाराष्ट्र। गौरीश ने सही जवाब दे भी दिया, वेल डन, बहुत बढ़िया। साहिल, गुड जॉब। ग्लोरी, मनीषा, शर्वरी, वेल डन शाहीन, अभिनव, विवेक, सत्यम, ममता, अदिति,
Akansha, good job guys, good going. A is absolutely the correct answer. अब बढ़ते हैं आगे. इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए मुझे जल्दी से भाई. कौन सी टीम ने आईपीएल की लखनऊ फ्रेंचाइज जो है कौन से ग्रुप ने खरीदी? ये तो पता ही होगा आपको. सुपर जायंट्स, लखनऊ सुपर जायंट्स इज द नेम. केएल राहुल इज द कैप्टन. आज मैच भी है उनका. सीवीसी कैपिटल नहीं है, आपको पता है सीवीसी कैपिटल जो है अहमदाबाद, जो गुजरात फ्रेंचाइज है उसकी ओनर है. अडानी अब जो है यूएई में एक लीग हो रही है उसमें खरीद रहा है टीम, अडानी ग्रुप. ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज ए, इट इज आरपीएसजी ग्रुप. बिल्कुल सही कहा अर्शी आपने, वेल डन. तान्या, मुस्कान, आभाष, एक ही बार आंसर दो बेटा. यस, वेरी गुड. बहुत 15 बार लिख दिया आपने. द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स ए, आरपीएसजी ग्रुप. एब्सोल्युटली करेक्ट. चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन जल्दी से बताइए. व्हाट इज द आंसर? लेट्स गो. सिक्स्थ क्वेश्चन, क्या है जवाब दोस्तों? वेरी गुड, वेल डन. कुंदन, दमन. यस, यू गाइस आर करेक्ट. नूरी की जब हम बात कर रहे हैं, द करेक्ट आंसर इज साउथ कोरिया. समथिंग विच वी डिस्कस टुडे इन द क्लास इटसेल्फ. क्लास में ही हमने आज ये डिस्कस किया था. तो बहुत बढ़िया, गुड जॉब मुस्कान, वेरी गुड. वायलेट, वैभव, क्लास लगा रहे हैं सारे के सारे मित्र हमारे. अंश, अर्शिया, सत्यम, प्रणीता, वेल डन. तान्या, एवरीवन, शाबाश, गुड जॉब. चलिए जी, next, seventh question. Who becomes the first film director to shoot a film in space named as the challenge? अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन यही चीज हमने डिस्कस की थी, राइट? अब इसको क्या किया उन्होंने, डायरेक्टर पूछ लिया. तो ये हमारे अंदर खुद से ही इंक्विजिटिवनेस होनी चाहिए थी कि हम फटाफट जैसे ये न्यूज देखे हम तुरंत उसका डायरेक्टर ढूंढ लें, राइट? तो ये सब चीजें बेसिकली आपको समझनी है कि रिलेटेड चीजें जो है हमसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं. सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग एंड एनीथिंग. Who becomes the first film director to shoot a film in space? The answer to this one is, chaliye, the correct answer is B, and I'm very happy. Shreya, Daman, Arpit, Vaibhav, Vivek, Ali, Raju, Shikhar, well done. Ayushi, good job. Satyam, Ashmita, well done everyone. Pranita, Gaurish, yes, B is the right answer. Yeah. Eighth question next. Recently inaugurated Kushinagar International Airport is the dash airport in उत्तर प्रदेश. बताइए कौन सा नंबर का एयरपोर्ट है भाई उत्तर प्रदेश में? बहुत सारे एयरपोर्ट आ गए उत्तर प्रदेश में. कौन सा एयरपोर्ट हो गया जी? हमने डिस्कस किया हुआ है ये. द करेक्ट आंसर टू दिस वन इज डी, 9th एयरपोर्ट इंटरनेशनल. राइट, 9th इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बेटा. नहीं, गलत हो गया. 7th बोलने वालों, गलत बोल दिए आपने. ये हमने डिस्कस किया हुआ है, गलत नहीं होना चाहिए था ये गलत हुआ तो बहुत गड़बड़ बात है दोस्तों. अब एक और चीज दोस्तों, बिफोर आई मूव ऑन टू शेयर द आंसर फॉर द 9th क्वेश्चन, अगर आप लोगों ने ये वीडियो देख रहे हो और अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया भाई, इससे ज्यादा नाइंसाफी नहीं हो सकती है. फटाफट से लाइक का बटन दबा देना है आपको, राइट? जल्दी से, क्विकली मेक श्योर दैट एवरीवन वाचिंग फटाफट से लाइक का बटन दबा दीजिए जल्दी से. और उसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, बाकी के जो महीने हम डिस्कस करेंगे तो वो आप कोई भी मिस ना करें, राइट? तो जल्दी से मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन. जो लाइक का बटन दबाएगा एग्जाम में भाई फायदा होगा उसको. चलिए, alright, 9th question. Who has been appointed as the ambassador of the Russian Film Festival in India? The answer is भाई जब भी मैट के डायरेक्टर हैं ये. It is very good. ममता, श्रेया, आकांक्षा, कुंदन ने तो सी बोल दिया. The correct answer is इम्तियाज अली. इम्तियाज अली is the correct answer. Well done. आवास, विवेक, yes, A. इम्तियाज अली is the correct answer. चलिए, next, again something which has been discussed in the class, done in the class itself. Name the Indian cricketers who have been awarded the life membership at the MCC, the prestigious MCC. कुमार संगकारा को इसका चेयरमैन भी बनाया गया था MCC का. बताइए कौन है? The correct answer to this one, I am sure all of you are already aware. The correct answer to this is, it is, yes, it is. अजय जडेजा कौन बोल रहा है? इट इज हरभजन सिंह एंड जावागल श्रीनाथ. वेल डन अली, वेल डन सत्यम, वायलेट, अदिति, दमन, शर्वरी, गौरीश, वेल डन कृष्णा, वेल डन कुंदन. गुड जॉब, गुड गोइंग गाइस, गुड गोइंग. वेल डन एवरीवन, गुड जॉब.
सिद्धांतेंद्र सिमा, वेल डन बडी, गुड जॉब गुड जॉब गुड जॉब, वेल डन ममता, आभाष, एवरीवन, सभी ने अच्छा किया भाई। शाश्वत, वेल डन, गुड जॉब। What is your score now? Out of the 10 questions that we discussed today, कितना स्कोर आया आपका? जल्दी से शेयर करके मुझे बताइए फटाफट से। दोस्तों आप सबके लिए, जब तक आप लोग अपना स्कोर शेयर कर रहे हो, एक अच्छी न्यूज मैं शेयर कर देता हूं। अगर आपने अभी तक ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम में एनरोल नहीं किया है बायजूस एग्जाम प्रेप में, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास। राइट नाउ वी आर रनिंग अ फ्लैट 25% ऑफ अक्रॉस ऑल आवर ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम्स। तो 20% ऑफ मिल रहा है, फायदा उठाइए इसका। तो जल्दी से जब आप एनरोल करेंगे तो मेक श्योर कीजिएगा आप कोड डालें summer20 and you can avail flat 20% off on all our online classroom programs, including this one, the amazing program, the amazing course for all of you. CLAT 2023 के लिए comprehensive combo course है, सारे subjects एक साथ कराए जाएंगे। मतलब है आपका कि एक ही जगह पे one stop destination for all law entrance exams, right? तो ये CLAT 2023 के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं, this is definitely the batch for you. और अगर आप तैयारी कर रहे हैं क्लैट 2023 की, आपको प्रिपरेशन में एड करने के लिए आप देख सकते हैं लीगल रीजनिंग का हम एक वर्कशॉप कंडक्ट करा रहे हैं आपके लिए 14 मई को 4 बजे, तो उसको भी जरूर आप अटेंड कीजिएगा। निवेदिता मैम इज देयर, वो आपको यहाँ पे इस सेशन में सारे जो निटी-ग्रिटीज चाहिए लीगल रीजनिंग के लिए वो सब आपको बताएंगे। इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं क्लैट 2022 की क्रैश कोर्स, दोस्तों अब भी ज्वाइन कर सकते हो, कुछ ही दिन बाकी हैं ज्वाइन करने के लिए। उसके बाद जो है फिर ऑब्वियसली एग्जाम ही है, तो जितना जल्दी आप जुड़ेंगे उतना जल्दी आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। तो डोंट वेट, फटाफट से ज्वाइन ASAP। चलिए जी, अब बिफोर आई एंड लेट मी हैव अ क्विक लुक एट योर स्कोर्स। फटाफट से देखते हैं 9, 10, क्या बात है यार भाई, शुरुआती 9 और 10 से हो रही है। गुड जॉब अर्पित, दमन, कुंदन, गुड जॉब। 8, 7, अर्शिया वेल डन, 7, 9, 9, 9, क्या बात है। सत्यम 10, ग्लोरी 10, आकांक्षा 8, मुस्कान 9, अभिनव 7, 8, आभास बिचन, क्या बात है भाई। 10, बहुत बढ़िया भाई, सब सारे के सारे धुआंधार हो यार आप सब, तो क्या बात है, मानना पड़ेगा। चलिए, Alright guys, so with this we will wrap up today's class। आज आप लोगों के काफी क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे कि भाई सर अगला एपिसोड कब होगा, ये कब होगा, इसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा जैसे ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। यू विल बी नोटिफाइड दैट व्हेन विल द नेक्स्ट वीडियो बी, तो वो आपको सारा का सारा डिटेल अपकमिंग वीडियो सब पता चल जाएंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है, फटाफट से डू इट भाई, एग्जाम के लिए इतना तो करना बनता है। इसके अलावा और भी एक जने ने पूछा था कि सर क्या ये करंट अफेयर इतना बहुत है क्या, राइट? तो ये तो शॉर्टकट अप्रोच हो गई। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि भाई शॉर्टकट्स नहीं है, दिस इज अ क्विक रिवीजन, और अगर कुछ मिस आउट कर गए हैं तो वो यहां से भी कर सकते हैं, बट ये कहना गलत होगा कि सिर्फ इतना कर लो और बहुत है, ऐसा नहीं है, राइट? दिस इज अ क्विक रिवीजन, राइट? सम इंपॉर्टेंट थिंग्स वी आर डिस्कसिंग हियर इन classes, we take 3 to 4 classes for 1 month, right? 2-3 क्लासें आराम से लगती है एक ही महीने की, तो आप समझ सकते हो यहाँ पे लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में हम यहाँ पे कर रहे हैं, इन डिटेल भी नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली राइट ये रिवीजन है, बट इन टॉपिक्स को आप डिटेल में कीजिए, आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जाम्स। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आई विल रैप अप टुडेस क्लास। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, goodbye, sayonara, bye bye, thank you so much।